the difference between the electrode potential, the difference between the electrode potential of two electrodes when no current is drawn through the cell is called what? यहां मैं कहना चाहूंगी, वैसे इसका जो राइट आंसर है पहले बता देती हूँ, इट इज सेल ईएमएफ. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. जो हमारा ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या है ये? इट इज द एनर्जी provided by whom? By a cell or a battery per coulomb of a charge passing through it. It is measured in volt. So it is the potential difference across the terminals of the cell when no current is flowing. Open circuit के बारे में बात कर रही हूँ. It remains constant basically. ठीक है, तो इन अ वे जो हमारा EMF है, मैं दोबारा बोल देती हूँ, EMF क्या है? It is the energy provided. It is the energy provided by a cell, clear है, or a battery, energy provided by a cell or a battery, fine, per coulomb okay, of charge, per coulomb of charge, energy provided by a cell or battery per coulomb of charge passing through it, passing through it. It is measured in, it is measured in volts, V basically. So it is the potential difference across the terminals of the cell. It is the potential difference across the terminals of the cell when no current is flowing. It remains constant basically. अब अगर मैं बात करूँ potential difference की, so potential difference क्या? It is the amount of work. Potential difference क्या है? अगर मैं potential difference के बारे में बात करूँ तो बेटा जी potential difference है क्या? Potential difference क्या है? It is the amount of work. It is the amount of work to be done. It is the amount of work to be done to move a unit, to move what? A unit positive charge. A unit positive charge from one point to another point, from one point to another point. क्लियर आ रही है ये वाली बात? सो इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन वोल्ट्स. पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इट डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. EMF रिमेन्स द कॉन्स्टेंट. पोटेंशियल डिफरेंस तो एक रिजल्ट है और EMF एक कॉज है बेसिकली. तो यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा थ्रू द सेल, इट इज नोन टू बी एज सेल EMF. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन.